Good evening, my dear students. So, next topic of our census and sample method is methods of sampling. Okay, so we have a two type of sampling method. One is random and one is non-random sampling. Random sampling in which all units get chance. All units get chance means if you have selected 10 people, 10 out of 10 all are getting the chance. And non-random sampling means if you have selected 100, sorry, out of 100 you have selected only 10, so all unit are not getting chance. Fine. Random sampling further on divided into parts: lottery method and tables of random number, and this is again divided into 5 parts that is discussed later on. Okay, random sampling. Okay, by the name it has been clear, randomly, which we are each and every unit of universe has equal chance of being selected. randomly हम पिक कर लेते हैं, जैसे हमारे 10 स्टूडेंट है. ओके, रेंडमली हम कहते हैं कि रोल नंबर 2 खड़ा हो जाए, रोल नंबर 5, रोल नंबर 8, रोल नंबर 6. दिस इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग. ओके, इन द रैंडम सैम्पलिंग दैट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट: लॉटरी मेथड एंड टेबल ऑफ रैंडम नंबर. ओके, यहाँ पर लॉटरी वही वाली लॉटरी है जो अभी आपके दिमाग में आ रहा है, दैट देयर आर सो मेनी स्लिप्स, वी कीप इट इन अ बॉक्स एंड देन सम स्लिप्स आर ड्रॉन आउट ऑफ द बॉक्स. तो जिसका नंबर आ गया दैट हैज बीन सेलेक्टेड. क्लियर. लॉटरी मेथड में पेपर स्लिप्स बनाई जाती हैं, बॉक्स में डाला जाता है, बॉक्स में से स्लिप्स को निकाला जाता है एंड जो आपकी सेलेक्ट हो जाती है दैट इज कॉल्ड द लॉटरी मेथड. टेबल ऑफ रैंडम नंबर. ओके, दैट इज टेबल ऑफ रैंडम नंबर मीन्स सेट ऑफ टेबल्स. ओके, बहुत सारे टेबल्स बना दिए जाते हैं एंड ए सैम्पल इज फ्रेम्ड फ्रॉम दिस टेबल. इन जो टेबल्स है उन्हीं में से सैंपल ले लिया जाता है, तो दिस इज कॉल्ड टेबल ऑफ रैंडम नंबर. ओके, non-random sampling, as I told you earlier, that all units are not getting chance. Okay, that is अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पर 2 को लिंक किया हुआ है. अदरवाइज non-random sampling is having 5 parts. It means 5 types of non-random sampling is there. Okay, बट मैंने यहाँ पर इसको एक साथ क्यों किया, क्योंकि दोनों के मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है. Purposive sampling in which the investigator himself make the choice of the sample item which is in his opinion are the best. Okay, मतलब जो उसे ठीक लगता है वो सेलेक्ट कर लेता है. Convenience sampling is also which sources convenience. Okay, that means whatever convenient to the investigator, he himself select that data. ओके, जैसे मैंने यहाँ लिखा है टीचर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टर. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ईच एंड एवरी स्कूल, एवरी कॉलेज, द इन्वेस्टिगेटर itself chooses best method, that is to select the data from the prospectors. Okay, so it means उसे लगा कि भाई इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ऑल द स्कूल्स और कॉलेजेस, कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी? प्रॉस्पेक्टस से. सो टीचर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रॉस्पेक्टस इज द फॉर एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग. Merit and demerits, I have written it, that is both are written over here, that merits are flexible. Okay, why it is a flexible method? Almost special significance is given to each and every unit. सिंपल टेक्निक है, वेरी सिंपल टेक्निक, जो उसे ठीक लगता है वो सेलेक्ट कर लेता है. बट देर आर डीमेरिट्स. ओके, इतने सारे सेंसस एंड सैम्पल मेथड और बहुत सारे मेथड फ्रॉम द स्टार्टिंग वी आर डूइंग. सो आई होप यू कैन एनालाइज बाय योर ओन व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट. पर्सनल बायसेस कुड बी देयर. ओके, क्योंकि उसे अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से करना है तो वो उसमें पक्षपात कर सकता है. रिलायबिलिटी बिकम्स डाउटफुल. येस, बिकॉज पर्सनल बाइसेस आ गए तो रिलायबिलिटी तो हो गई कि डाटा आपका हो सकता है एक्यूरेट ना हो. ठीक है, आई रिमाइंड यू अगेन स्टूडेंट, kindly watch my earlier videos, previous videos. If you are not going to watch my previous video, these concepts become difficult for you, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. दो स्टूडेंट आर वॉचिंग, दे आर गेटिंग इट ईजिली. ओके, नेक्स्ट इज बेटा स्ट्रेटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग. Okay, mixed sampling in which the population is divided into different strata, you can say that groups or classes. पॉपुलेशन को क्या करते हैं? ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और उस ग्रुप में से जो है रेंडमली वी आर पिकिंग सम from the according to the different characteristic the data has been selected. Okay, quota sampling, population is divided in different group according to different characteristics, so both are the same. Okay, I hope it is clear to you. Again I'm telling you, population is divided into different characteristics in different groups
according to their different characteristics. Okay, जैसे यहाँ पर देखिए, creating a graph from a population of employees depending on number of years they have worked at your company. अब हमने देखना है कि we are supposed to select the data. So यहाँ पर क्या किया, population means population क्या है, population of employees. Okay, strata क्या है, that is number of years they have worked. Okay, so according to their different characteristics we have divide our data into different strata, group or classes. Okay, randomly out of 1,000 people we choose 100. Okay, merit क्या है, less expensive है. Okay, this is not more very costly method, covers diverse characteristics क्योंकि इसमें है ही different characteristics, so it covers diverse characteristics and it gives more reliable result rather than purposes and convenience sampling. Demerit, it gives a complete knowledge, okay, because you are having the complete population and from the complete population we are dividing the data, so it is giving more complete knowledge. Biasness could be there. Okay, I hope now this word is clear to you. Biasness हो सकती है क्योंकि यहाँ पर अगर इन्वेस्टिगेटर चाहे तो पॉपुलेशन को अपने अकॉर्डिंगली डिवाइड कर सकता है. But remember, if population is small, this method is going to be very difficult because here you are selecting some group और you are dividing your population into different strata. तो अगर आपका population साइज छोटा है तो आप divide कैसे करेंगे, further on वो divide ही नहीं कर सकते हैं. Right, last but not least, that is systematic sampling. Okay, very easy. That is data are to be divided according to numerically, geographically and alphabetically. Numerically number wise 1 2 3 4, geographically Punjab, Haryana kind of, and alphabetically A B C D. Okay, so to make it more convenient I have put an example step by step so that it is more clear to you. ओके जैसे 100 स्टूडेंट 10 आर टू बी सिलेक्टेड, 100 स्टूडेंट में से 10 सेलेक्ट किए, और यू कैन पुट अ एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 50,000 है जिसमें से 1,000 पीपल सेलेक्ट किए, रैंडमली वी हैव सिलेक्टेड 1,000 पीपल. एक लिस्ट बनाई अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकली, जियोग्राफिकली और अल्फाबेटिकली, and every 50th person would be chosen. इसमें systematic sampling में every nth item has to be selected. Okay, how do we know every 50th person would be chosen? 50,000 total population is there. 1,000 people we have selected randomly. So every 50th person would be chosen in the systematic sampling. Okay, what are the merits? Very simple method because population is divided among the people you have been selected and then we can get data. Over here, loss of possibility, there is a very less possibility of personal bias क्योंकि आप हर nth item choose कर रहे हो. जब आप nth item choose कर रहे हो तो there is less chance of personal biases. Demerit, okay, demerit, one of the demerit population is homogeneous. आपकी population एक जैसी है तो it is difficult to select the data, and here all the units are not getting chance. I told you that every nth item, every 50th item has to be selected. तो बीच वाली items जो है उन्हें chance नहीं मिलता to be selected. Okay, hope you liked the video. Thank you so much.